6.64 बिलियन, ये है द नंबर ऑफ पीपल हु यूज अ स्मार्टफोन। और ये जो नंबर है इज एक्चुअली राइजिंग ग्लोबली, जो है ये नंबर बहुत आगे जा रहा है। काफ़ी क्वेश्चन साथ में रेज होते हैं कि क्या हम लोग इन स्मार्टफोन्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गए। बट याद रखिए, नॉट ऑल एडिक्शंस आर बैड। जो बेनिफिट्स होते हैं एक स्मार्टफोन के, ये ग्रो कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। स्मार्टफोन्स ने हेल्प किया है टू रेवोल्यूशनाइज हाउ वी रन आवर बिजनेसेस, एंड मोर ओवर आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है इनका ऑन स्मॉल बिजनेसेस, कि वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ऐसे दरवाजे खुल गए उनके लिए दैट अर्लियर वर नॉट एक्सेसिबल, एंड दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू गेट मोर एक्सपोजर फॉर देयर प्रोडक्ट, देयर मार्केटिंग एंड देयर एक्चुअल बिजनेस। कस्टमर्स ऑन द अदर हैंड, उनके लिए बहुत आसान हो गया है, उनको एक्सेस मिलता है टू बिजनेस दे डिडंट नो अबाउट बिफोर, उनके नए नए प्रोडक्ट्स, एंड दे कैन बाय फ्रॉम देयर होम्स और इवन व्हेन दे आर ऑन द मूव। और आजकल स्मार्टफोन्स में इतने सारे फीचर्स आ गए हैं दैट कैन हेल्प रन अ बिजनेस विद ईज। मैसेजिंग एप्स हैं टू द कैमरा, एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल in your hands. लेकिन I think सबसे बड़ा टूल of a smartphone that can be used for a business is the camera. Companies जो हैं वो तो बहुत कमाल कर ही रहे हैं कैमराज में, लेकिन अब businesses ने ये जितने नए innovations हैं, they are using it to their advantage. जितना content है आजकल शूट होता है on very powerful cameras, and smartphones have become much more than just calling devices. हम लोग मिले हेतल और लेखनी देसाई से। ये बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेट्स मेक इट ग्रो विद आवर स्मार्टफोन्स। माँ बेटे की जोड़ी हेतल देसाई और लेखनी देसाई ने अपने घर से द इंडियन एथनिक कंपनी शुरू की। हेतल और लेखनी दोनों की फैशन में कोई ट्रेनिंग तो नहीं है, लेकिन दस्तकारी से उनका लगाव और जुनून ऐसा था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी का कारोबार किया जाए। बस 50,000 रुपए के निवेश और एक फोन के साथ वो इस सफर पर निकल पड़ी। This was started as a passion project, and the whole idea was that, you know, this was not started with the idea that we are launching a business. It was a hobby, it was an experiment, because my mother loved making clothes, and coming from a middle class family, you know, we loved using the best of our resources that we had at hand, and phone being the simplest, you know, with little investment that we had. 2016 में जब इन्होंने ब्रांड शुरू किया तो अपने फोन से कपड़ों की तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर उन्हें बेचने लगी। फोन से तस्वीरें लेना आसान तो था ही, एक फायदा ये भी था कि जब और जहां चाहे वो तस्वीरें ले सकती थी। इसके लिए पेशेवर फोटोग्राफर के साथ तालमेल करने का भी झंझट नहीं है। उन्हें ये भी लगा कि फोन के साथ कैमरा तो हमेशा रहता ही है, इसलिए पल भर में कोई भी तस्वीर ली जा सकती है। What I realized was that, you know, when you hire a photographer, a professional photographer, the gestation time from the first shoot to the output is very long. But with the phone, you get the exact same quality, and, you know, the output is immediate. So, you know, and plus in the lockdown, you know, when all the brands, you know, were not doing any photo shoot or there weren't photographers, the phone really came handy. We were the first brand that time to launch leisure wear. I made my sister, you know, sit in the balcony. I took the phone, we shot some photos. They came out so well, and we put it on social media right in the middle of the lockdown. And you won't believe, but the entire range was a complete sellout. And literally the 4 years of our business that we've run, we've not shot our photos with a professional camera. It's all on the phone. I feel the quality is really good. It's super fast and quick, and you know, as a brand, as a growing brand, you need a lot of photo shoots. And sometimes when you want to do something impromptu, it's just so much of, you know, there's so much of ease with the quality. So I think that's one of the major considerations for us to use a smartphone. लेखनी को लगता है कि फोन से खींची जाने वाली तस्वीरों की क्वालिटी शानदार है, बल्कि उन्हें फोन से और पेशेवर कैमरों से ली गई तस्वीरों और वीडियो में कोई फर्क नजर नहीं आता। तस्वीरें इतनी साफ होती हैं कि ग्राहक कपड़े खरीदने का फैसला कर लेते हैं, जिससे उनके कारोबार को बढ़ने में मदद मिली है।
I think the sales itself speaks for it, right? We've, from doing zero sales to now having a turnover of 10 crores. I mean, the numbers speak for themselves and everything is shot on the phone. So I'm sure the quality is as good because people are able to find out, the finer features of the clothing that we have and able to understand what the product really is. And, if I think the numbers speak for, for themselves. कारोबार के नजरिए से इन्होंने तय जरूर किया था कि पेशेवर फोटोग्राफर से कपड़ों की तस्वीरें खिंचवाएं, लेकिन तस्वीरों की प्लानिंग और खींचने में लगने वाले वक्त पर वो समझौता नहीं कर सकती थीं। साथ ही अच्छे फोटोग्राफर सस्ते नहीं मिलते, तो खर्च भी काफी होता। We did try to shift to professional photography, but honestly, it's a mammoth of a task because there is so much of pre-planning that goes into it, and it's not agile. You have to plan a lot, and then on the day, it takes a whole lot of time, a whole lot of people to manage the shoot with the lights and everything. On the phone, it's just more easier. You don't have to really look at the technicality of it, manage the lights, the frame and everything, because the phone already has the setting, the portrait modes and everything. They just make the photos look so good. And for us, especially, the output is also very important. When the last time we did a photo shoot with a photographer, they gave us the output 1.5 months later. So, in that 1.5 months, had I shot with a phone, I would have literally put up 15 collections on the website. And here, I'm just one collection, 1.5 months. That's a lot of time. And the environment is so competitive. If you're not doing things fast, you're out and lost. कैमरे की अच्छी क्वालिटी ही नहीं, इसे इस्तेमाल करने की एक वजह ये भी है कि वो इसके जरिए अपने कारीगरों और ग्राहकों से भी जुड़ी रहती हैं। स्मार्टफोन से कारोबार चलाना बहुत आसान है क्योंकि उन तक सारी जानकारी सही समय पर पहुंच जाती है। अभी तक हम लोग पूरा काम फ़ोन पे, क्योंकि आर्टिसंस जो है गांव में रहते हैं उनके पास और कोई फैसिलिटी है नहीं, उनके पास स्मार्टफोन ही है, तो वो लोग व्हाट्सएप पे ही हम लोगों को डिज़ाइंस वगैरह भेजते हैं। उनको कुछ कोड वगैरह समझ में नहीं आता, जब तक हम लोग फ़ोटो नहीं भेजते तो वो लोग समझते नहीं है कि हाँ ये फ़ोटो की इतने मीटर्स फैब्रिक बनाना है। हमारे जो शॉपिफाई हमारी वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है वो भी है, तो कितने ऑर्डर्स आए, कहीं मैं बाहर गाँव गई और मुझे कुछ एक्सेस करना हो तो मेरे पास फ़ोन ही है, तो फ़ोन से मुझे पता चल जाता है कि इसका ऑर्डर आता है, इसका नहीं आता है, कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितना अपना सेल हुआ, तो जो कुछ भी मंगवाना है तो मैं इमीडिएटली मुझे फ़ोन पे पता चल जाता है। जो बिजनेस हेतल देसाई के बेडरूम में सेलफोन से लिए गए कपड़ों के कुछ फोटोज और वीडियोस द्वारा शुरू हुआ है, आज भी अपने प्रमोशन, मार्केटिंग, सेल्स और पेमेंट्स के लिए सेलफोन पर निर्भर है। द इंडियन एथनिक कंपनी का कहना है कि ये बिजनेस इसीलिए वो चला पाते हैं क्योंकि सेलफोन्स में आए हुए तकनीकी प्रगति बिजनेस चलाना सपोर्ट करते हैं। कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ मुंबई से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं लेखनी देसाई से टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट इन्होंने ये बिजनेस शुरू कैसे किया। वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले तो मेरा वही सवाल है दैट एवरीबडी विल वांट टू आस्क, क्योंकि आपने सोचा कैसे कि आपका बिजनेस जो है यू विल एक्चुअली रन इट ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीटली ऑन योर स्मार्टफोन। The Indian Ethnic Company, the brand that my mother and I started, as mentioned, we started it from our bedroom, right in a corner of our tiny little house in Bombay. This was started as a passion project, and honestly, we did not have that much money when we began. I think the easiest way, without a lot of investment was to do, what we had in our hands and use the best of our resources. And I think that time the smartphone worked the best because we did not have to invest in expensive photographers, and the output was immediate. So today if we shoot, we immediately had the photos and we could immediately upload it on social media.
So, with less investment, quicker output, that was the entire idea. तो स्मार्टफोन ने आपके बिजनेस को ग्रो कैसे किया? हाउ हैव यू प्रमोटेड इट यूजिंग द स्मार्टफोन? The Indian ethnic company, the brand that we run, has honestly been started on the smartphone. It's a digital brand. We sell, we are an e-commerce business and we sell online. We started our business through Instagram and Facebook, through our mobile. We created the pages. And the photo shoot, as we mentioned, till date happens on the smartphone. The reels that we've created, which have been, garnering close to 50 million views, have all been shot on the smartphone. I think what really helps us is that with little investment, you get the output and the quality which is at par of professional cameras. Even now, when I talk to my friends and my family, they are in complete disbelief that till date we shoot majority of our content on the smartphone. You shoot today, you can edit it and you can upload it today itself. Vis-a-vis, when it's shot in a professional camera, you have to wait for the video to be processed, edited, and the timeline is just so high. And in today's time when everything is so quick and everything is like a now strategy, that really helps us to be quick and adept. Thank you so much for joining us on the show. Snapdragon आप सबको इनवाइट कर रहा है ऑल सेल गुरु फैंस टू जॉइन द ग्लोबल कम्युनिटी जिसका नाम है स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स। इससे आपको एक्सेस मिलेगा टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी, एक चांस मिलेगा आपको टू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट्स बिहाइंड द सीन्स, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट एंड मच मच मोर। अब मैं तो ऑलरेडी स्नैपड्रैगन इनसाइडर हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आप भी बन सकते हैं बाय सिंपली फॉलोइंग स्नैपड्रैगन ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, उनके हैंडल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और आपको एक बहुत बड़ा चांस भी मिल रहा है टू विन अ स्मार्टफोन बाय पार्टिसिपेटिंग इन द NDTV Snapdragon contest at ndtv.com/unleash your dreams.